Good morning, class 7. Subject Maths, Chapter 4, Chapter name Rational Numbers. Exercise 4B, page number 66. Question number 3. Which of the following two rational number is greater in each of the following pairs? Here two rational numbers are given. Now students, for comparing the rational number, we have to do one thing. First, we have to convert them into a standard form. So, if there will be double negative, there will be 30. Now it will become 5 upon 9, 3 upon 8. Then we do what? Cross multiplication. So students, 5 8 ja and 3 9 ja. 5 8 ja 40, 3 9 ja 27. So students, 5 by 9 is greater than 3 by 8. Okay students, in this case. Now we discuss question number 2. Four upon minus 3 or minus 8 upon 7. Let's see यहाँ पे कैसे करेंगे. 4 upon minus 3 minus 8 upon 7. ये ओरिजिनल फॉर्म है. इसको हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो ये ऑलरेडी माइनस ऊपर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यहाँ पे माइनस नीचे नेगेटिव डिनोमिनेटर में. इसको हम कहाँ करेंगे? एबव इन न्यूमरेटर. सो इट बिकम minus 4 upon 3 and minus 8 upon 7. So students, it become minus 4 into 7 and minus 8 into 3, minus 28 and minus 24. So students, in this which one is greater? Minus 24 is greater. That means four upon minus 3 less than minus 8 upon 7. Okay, minus 8 upon 7 is greater. Okay students, now we will discuss next question. Okay students, now we will see question number 3, minus 12 upon 5 or minus 3. So here I write minus 12 upon 5 and minus 3 upon 1. Now we do cross multiplication. Minus 12 upon minus 12 into 1 and minus 3 into 5. So here minus 12 and here minus 15. So students, in negative अगर पॉजिटिव होगा 12 15, इससे 15 बढ़ा, बट नेगेटिव में ये बढ़ा. Thus minus 12 upon 5 greater than minus 3. Okay students, now question number 4. 7 upon minus 9 or minus 5 upon 8. So students, here it is not in the standard form. So we write it in the standard form, minus 7 upon 9 and minus 5 upon 8. So students, minus 7 into 8 and here minus 5 into 9, minus 56, minus 49. So students, minus 49 is greater than minus 56. Thus 7 upon minus 9 is less than minus 5 upon 8. Means minus 5 upon 8 is greater. Okay students, now question number 5 and 6 you do as your homework. Now we will discuss next question, and question number 4 is fill in the blanks. You can do it. We will discuss question number 5. Okay students, now we will discuss question number 5. Arrange the following rational number in ascending order. Here the rational number is given. It is all in positive. 2 by 5, 7 upon 10, 8 upon 15, 13 upon 30. So students, first of all, for making them in ascending order, we find their LCM of denominator. इसके लिए हम पहले LCM
डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, देन वी कंपेयर। So see LCM of 5, 10, 15, 30. Here I have find it. You can note down. Proceed is equal to 30. Now students, the LCM will be divided by each of the denominators. LCM 30 5 से डिवाइड किया, 30 10 से डिवाइड किया सेकंड कॉलम में, LCM 30 को 15 से डिवाइड किया, फिर 30 को 30 से. Now 6. So students, you all know we can multiply in a fraction by the same number with numerator and denominator. So same number ये 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 से 12 and 5 6 से 30. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सारे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 30 लाना है, तब जाकर के कंपेयर हो पाएगा, चेक होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Now see here 7/10 into 3/3 is equal to 21/30. Okay students, now here 8/15 into 2/2 is equal to 16/30. Okay students, then 13/30 into 1/1 is equal to 30/30. Okay students, now we write this equivalent fraction. जो equivalent fraction है ये जो है सेम इसी के इक्वल है, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका चेंज हो गया, 30 इक्वल हो गया, ताकि आप देख के कंपेयर कर सको कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. In ascending order. Ascending order. अब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा है. कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो. नीचे सबका सेम है 30 30 30. तो अब यहाँ पे देखो 12 ये सबसे छोटा है, इसलिए राइट 12/30. Then this is 21 16 30. इसके बाद कौन सा 13/30. Then 16/30. Then 21/30. So students, one thing, see here, the 12/30 represent which number? 12/30 is 2/5. After 2/5 so 2/5. Then ascending, then we write 13/30. Now 16/30. So 16/30 is 18/15. 8/15. Sorry. We write 8/15. And then 21/30 is 7/10. So students, you can see here this 12/30 is 2/5. 13/30 this number. Now 16/30 means 8/15. Now 21/30 means 7/10. 21/30 7/10. So it is in ascending order. Okay students, now we will see question number 2. Okay students, now we will discuss question number 5 second. So -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24. So here is negative in denominator. So first of all we convert this rational number in a standard form. So when it converted into a standard form, then negative goes to the numerator. मतलब negative denominator से numerator में फॉरवर्ड हो जाएगा. Then it become -3/4, -5/12, -7/16, -9/24. यहाँ पे नीचे का नेगेटिव सब ऊपर चला गया numerator में. Now LCM of numerator.
सेम हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4, 12, 16, 24, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर फाइंड किया, क्या है 48। यू कैन सी इट नाउ। वी डिवाइड सेम एज 48 by each of the denominator. So 48 divided by 4, 12, 48 divided by 12 is 12. Is from here you see 4. 48 divided by 16, 3. 48 divided by 24, 2. Now students, we multiply minus 3 upon 4 into 12 upon 12. So it is equal to minus 36 upon 48. Okay students, then minus 5 upon 12 into 4 upon 4 is equal to minus 20 upon 48. Okay students, then minus 7 upon 16 into 3 upon 3 is equal to minus 21 upon 48, and here minus 9 upon 24 is equal to into 2 upon 2 is equal to minus 18 upon 48. Okay students, now we have to focus first of all in this value and we have to arrange them in a ascending order. In ascending order. In ascending order, which one is smaller? Minus 36, denominator same है, अब आप देखो minus 36, minus 20, minus 21, minus 80. तो यहाँ पे सबसे smallest होगा minus 36 upon 48. क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो ये हो जाता है स्मॉलेस्ट। नाउ minus 21 upon 48 and then minus 20 upon 48 and then minus 18 upon 48. So students, now see minus 36 upon 48 represent which number? Minus 3 upon 4. Minus 21 upon 48 represent which number? It represent minus 7 upon 16. Now minus 20 upon 48 represent which number? It represent minus 5 upon 12. Okay students, and then minus 18 upon 48 represent minus 9 upon 24. So this is in ascending order. This is that is high. Okay students, now question number 3 is same as question number 2. Now we will discuss question number 4. Okay students, now we will discuss question number 4. 2 upon 3, 3 upon 4, 5 upon minus 6, minus 7 upon 12. See, it is a type third. इसमें क्या है? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें all positive, सेकंड क्वेश्चन all negative, और ये थर्ड में क्या है? पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और नहीं है। देखो ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसके लिए हमने क्या लिखा? राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट 2 upon 3 same as 3 upon 4 minus 5 upon 6. ये माइनस न्यूमरेटर में चला गया, then minus 7 upon 12. Now students, LCM of the denominators 3, 4, 6, 12 is equal to 12. So we divide 3, 4, 6, 12 by 2. Here LCM is equal to 12. Now to divide the LCM by each of denominator. 12 divided by 3, 4. 12 divided by 4, 3. 12 divided by 6. From here we take, because here it is in a standard form, is equal to 2 and 12 divided by 12 is equal to 1. Now students,
we write 2 upon 3 into 4 upon 4 is equal to 8 upon 12. Then 3 upon 4 into 3 upon 3 is equal to 9 upon 12. Then the students 5 upon 6 into 2 upon 2 is equal to 10 upon 12. And then 7 upon 12 into 1 upon 1 is equal to 7 upon 12. Okay students, now we write them in a ascending order. So one here it is minus 5, so here will be minus 10 upon 12. And here is minus 7, so here minus 7 upon 12. Okay students, now in ascending order, so in ascending order we write part which number is smaller. पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, स्मॉलर कौन सा नेगेटिव नंबर. सो फर्स्ट दिस टू आर पॉजिटिव, so we take care in this which is smaller, minus 10 upon 12. Then we write minus 7 upon 12, and in between them which one is smaller, 8 upon 12. नेगेटिव नंबर पहले होगा, अब पॉजिटिव को लिखेंगे 8 upon 12. Then 9 upon 12. So students, minus 10 upon 12 represent minus 5 upon 6. Minus 5 upon 6 और क्वेश्चन में क्या है 5 upon minus 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 upon minus 6 लिख देंगे यहाँ. Then minus 7 upon 12. Then 8 upon 12 is 2 upon 3. And then 9 upon 12 means 3 upon 4. Okay students, same as you have to complete the homework descending order, you have to do yourself. Okay students, now we will see question number 7. Okay students, now we will discuss question number 7. Which of the following statements are true? First, minus 3/5 lies on the left of 0 on number line. चलो आप लोग सब नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन पता है, देखते हैं यहाँ पे. In a number line, this is a number line. In between there, in the middle there will be 0 and the right side, this is right. Right side positive and left negative. आपको ऐसा देखना है, राइट लेफ्ट, ना कि ऐसा उल्टा. ठीक है. देन लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव. देन minus 3/5 lies on the left of 0. 0 से लेफ्ट में राइट. minus 12/7 lies on the right of 0. It is not false. Sorry, it is not true. Means it is false. Now students, 1/3 and minus 1/5 lies on the opposite side of 0 on number line. अब ये देखो यहाँ पे 1/3 कहाँ रहेगा और 1/5 का minus 5/2 there नेगेटिव साइड. तो क्या होगा, lies on the opposite side of 0 number. हाँ 0 से opposite है, किधर है, किधर opposite. Now third is true. Now minus 18 upon minus 13 lies on the left of 0 on the number line. अब ये क्वेश्चन लॉजिकल है, आप लोग इस पे ध्यान से देखेंगे. दिस इज बोथ नेगेटिव, तो जब बोथ नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. कट हो जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या बन गया 18 upon 30. दिस इज लाइज. अब ये कहाँ करेगा, लेफ्ट में नहीं आएगा, ये पॉजिटिव किधर जाएगा, राइट में. सो इट इज रॉन्ग. नाउ minus 5/8 lies on the right of minus 5 upon 7. minus 5 upon 7 कहाँ रहेगा, minus 5 upon 7 नेगेटिव साइड में कहीं भी. then
-5 upon -8, so it become minus cancel, it become positive. So it will be here 5 upon 8. So students, let's see, -5/8 lies on the right side. हाँ ये देखो, ये इधर है, इसके राइट में ये 5/8 है, पहले से -5/7 के राइट में पॉजिटिव 5/8 है। ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स में एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। FA1 FA2 में। Okay students, so read carefully these terms and from CC paper objective question learn also. Okay, thank you.